Hello viewers, my name is Ashok Sengupta from School of Management Sciences, Lucknow. Friends, today as a part of the series project management lecture, we will discuss on the concept of deliveries, deliverables and scope of works. So, in earlier lecture we will discuss about the types of projects, life cycle of the project, concept of the project, characteristics of the projects. Now, there is some concept are also there. First is deliverables. What does it means? It means any product, services or result that may be accomplished to finish a project. A deliverables is any project, services or result that must be completed to finish a project. That means, when you complete a project, you have to hand over the things, and when it is completed, services, in case of services, IT service, ITES services. Now nowadays we see that is the e-commerce services, where we purchase each and everything from internet, it is part of service, and against that they deliver us the product. We have lots of websites like Amazon, Flipkart. You just give the order, they send you the product as a part of service. They are doing the service and we receive the service with product. The courier boy provide us the product. Some project need to develop capabilities to complete a project. These capabilities are also called deliverables. Some project need to develop a capability to complete the project capabilities. Project capabilities depend on what are our objectives of the project and how we complete the project at proper time. Question arises, does we able to complete the project on time? Does we able to satisfy our stakeholders, our owner? Does we able to satisfy what for which we started? यानी कि प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो हमारे ऑब्जेक्टिव था, क्या उस ऑब्जेक्टिव को हमने फुलफिल किया या नहीं किया। तो प्रोजेक्ट कैपेबिलिटीज़ इसका मतलब यही होता है कि प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किया गया, उस प्रोजेक्ट से जो हमें आउटकम चाहिए, द आउटकम मिला या नहीं मिला। Like if you establish a power plant, the outcome must be a proper generation of power, electricity, which is helpful for running the industries, households, irrigation, small industries, each and everything. But if the project established and power plant started, but not able to generate as much power as its want to be, then it is not a part of the capabilities or deliverables. Therefore, it is very important to test the project or monitor the project in each and every stage. If we want to launch a satellite and we launch the satellite, but is not able to reach the space, the space shuttle burst between because of any technical issues, the project is not complete. We cannot say the project has completed because it is not deliverables. Therefore, any product and services or result that must be completed to finish a project, जो complete हो गया के दिया जाता है उसे deliverables बोलते हैं. So, this is only a conceptual part which we a small question, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में.
types. Internal deliverables are usually deliverables that makes a project run, but they are not a part of the project and the end of the user like to see. They are the deliverables which the project generate internally. Project management, configuration management, training and testing are some example of internal deliverables. So, as the example you able to understand that whenever internal deliverables are those which are not a part of final project, but they are very useful to run a project. They are very helpful, very useful to run a project. Internal deliverables always helpful like project management, training and testing centers, especially in case of defense project, training and testing is very important. In case of health sector, training and testing is very important, and we heard about the training and testing of COVID shield, COVID vaccine in few months back. Each and every news channel give their statement that टेस्टिंग चल रही है, दवाइयों की टेस्टिंग चल रही है. इंटरनेशनल ब्रांड्स स्पुतनिक अपने टेस्टिंग कर रहा था, यूके का ब्रांड अपने टेस्टिंग कर रहा था. क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट गिव द इंजेक्शन और वैक्सीन डायरेक्टली टू द ह्यूमन बीइंग because human life is very important, directly to the human being without testing. So, in case of health, sector, internal testing is very important. If we talk about training, before hand over the project, the people who will handle this project or work on that, they will get trained. They will get trained. कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे करना है. In the case of defense, there is lot of training given to the pilots. In case of Air Force, training given to the army persons, naval cadets, because finally they must know how to handle that situation, how to handle the problems, how to handle the equipments. If you manufacture any kind of equipment and give them directly without any training, it is very difficult to handle it. In this case, there is the problem arises. Mishandling of any equipment can cause dangerously. So, training is a part of internal deliverables, project management is a part of internal deliverables, training given to the each and every person either in any sector at a time of joining. Someone name it induction training, someone name it normal training, on job training, because training is a part of human resource development, and it is very important to understand the life situation by the people who are going to work under that circumstances. In IT sector, people were trained first how to work in their own environment, how to work there on their own softwares. In academics, we learn different kind of books. We are learning here project management as a subject, but when we join any corporate, at that time they offer us training first, training to work and understand their work management, time handling. But this is not a part of that project.
This is not a part of that project. So, I hope you understand what is internal deliverables. They are used for to make a project run, they are helpful to make a project run, like the project supervisor, project controller, project auditors. They audit the things, they maintain the documentation properly, they maintain the proper filing, training to the people. Next is external deliverables. External deliverables are usually those that the project delivers to the user or the client. An external deliverable could be an IT system, a subsystem that makes it up to the resulting organization transit and benefit to the project to reduce the turnaround time of the project. So, external derivatives are when project delivered to the client, when project delivered to the client. In IT sector, when any IT company, manufacture the software, manufacture a software according to that system. Take any example like Infosys develop any financial software for banking, for bank. Okay. Now, when they hand over the software after testing, at that time the testing is a internal deliverables. Now, they hand over the software to their clients, so they give them training first of all, and the client receive that software from the manufacturing company Infosys. So, this is external derivatives. If we receive a courier from a courier boy, this is external delivery, because we are the client, we receive the product from company, but from company to client, from packaging, manufacturing that product is internal deliveries. Another example, if you having a say marriage ceremony and you give the whole contract to the some person, this is a project for him, this is a project for him, from decoration, from flowering to the carpet, food availabilities, refreshment availabilities, किस टाइम किसको क्या देना है, arrangement, who will, how the security is arranged, how lighting will arranged, is all part of the project given to that decorator, or you can say sometime event manager. This is today is a new word, event management. The event management is a project. You have to maintain the event, and marriage is an event ceremony. It is either a one day project or 2, 3, 4 days project. Someone having the before money, after money ceremony to and give you the contract of all the process. So, when you hand over all this thing, now when the visitors or the guests started coming, you feel that your project is completed. Before that your project have to be complete, and during that completion you have to check each and everything, testing the things, testing the food, tasting the food, not testing, tasting the food, testing lighting, electricity connectivity, supply of water, refreshment, all are arranged in particular places, use of the area given to you, it must be not congested, it will be free movement pass. So, there are different layout, but all small activities are the part of the project, and these are the initial stage, these are internal, and finally, when you provide your services, you hand over services to the owner,
जिसके घर में शादी है और आपने कहा कि सब तैयारी हो चुकी है और गेस्ट अपना, क्योंकि गेस्ट को ये नहीं पता कि कितना भी प्रोजेक्ट खत्म होना है, यू गिवन द टाइम ऑन द invitation card that 7:30 ceremony will start, guests started coming from 7:30. So you feel that your project have to be complete before 7:30, I mean either 7 or 6:30 आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए with proper testing, जिससे कि after starting the guest, when guests start coming, there is nothing to do, आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपको बैक एंड में करना है आप करते रहेंगे, ठीक है, आपको जो बैक एंड में करना है वो आप करते रहेंगे, जैसे कि फूड आइटम्स जो है, खाने पीने का आइटम्स है, उनको प्रॉपर अरेंज करना, उसे गर्म करना, क्योंकि गेस्ट अगर ये प्रॉपर सर्विस नहीं दी गई तो क्लाइंट का प्रॉब्लम इशू होगा, और क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम अगर होता है तो फ्यूचर में आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि पेमेंट इशू होगा, आपका पेमेंट रिलीज नहीं होगा, सेकंड आपकी गुडविल खराब होगी एज अ इवेंट मैनेजर, एज ए इवेंट कंपनी। सो सम कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो रिवर्सेबल नहीं होते हैं। आपने एक बार कर दिया, आपने डिलीवरी कर दी अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, और सर्विसेज ठीक नहीं निकला तो उसका रेटिंग, आज के टाइम रेटिंग चलता है, रेटिंग बहुत ख़राब जाएगा। इसलिए इट मस्ट बी नोटेड दैट both internal and external deliverables must be on proper time, proper way, according to the plannings, according to the plannings. Next is scope of work. Next topic is scope of work. So scope of work is the area in an agreement where work to be performed is described. The scope of work should contain any milestone, report, deliverables and end product that are expected to be provided by the performing party. The scope of work should also be contain a timeline of all deliveries. तो क्या समझ में आया? स्कोप ऑफ वर्क का मतलब होता है एक शीट, it is a sheet, kind of sheet which describe each and everything, which describe each and everything, which is a kind of agreement, जिसमें आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, और ना किया तो क्या हो सकता है, what could be the punishment, आपको साइन करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कौन करेगा, परफॉर्मिंग पार्टी एंड क्लाइंट, performing party and client. Let take same example of any, you can say either मेट्रो रेल का ले लेते हैं या फिर हम बात करते हैं कि मैरिज सेरेमनी की, कि ये चीज़ें, दोनों चीज़ें लाइव होती हैं, आप लोग देखते हैं। तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें हम लोग बाहर लोगों को देते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वी हैव अ लैक ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव द स्पेशलाइजेशन. People have the specialization, they can work easily. So we give a contract for a marriage ceremony of any person's daughter. Okay, किसी की बेटी की शादी है, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको पूरा शादी का अरेंजमेंट करना है, पूरे शादी का, यानी कि सजाने से लेकर, फ्लावरिंग से लेकर, फूड आइटम्स, उसके आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। स्कोप कहाँ कहाँ क्या करना है वो आपको बताएंगे कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ये चीज़ें देंगे आपको, उनका अपना पोर्टफोलियो होता है, वो दिखाएंगे कि यही डिज़ाइन आपको दिया जाएगा, ये फ्लावर डेकोरेशन का डिज़ाइन आपको दिया जाएगा, ये स्टेज डिज़ाइन आपको दिया जाएगा, एंड ये फूड आइटम्स की लिस्ट हैं, आपको इनमें से चुनना है अगर आप कितने का लेना पसंद करते हैं। नाउ डेज वी हैव अ पर प्लेट सिस्टम, तो पर प्लेट कॉस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व, तो पर प्लेट कॉस्ट इज so they give you offer that in that particular 800 rupee plate, 1000 rupee plate, 1500 rupee plate, we offer you this kind of food items. So each and everything is written on the paper and deliver and time also given.
when you could sign, both of the parties sign that contract, you have to pay only the money, some in advance and some at end of the work, and then you have to all the work have to be done by the performing party. फ्लावर कहाँ से लाना है, their own headache, sheets, plates, crockeries, whatever you ask, whatever you want as per the signed agreement, they provide you, delivered you in proper time. In proper time. For say example, at 7:30 evening you need a refreshment for the guest, they will arrange that at proper time. After 1.5 hours they arrange the dinner. So हो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ में प्रोजेक्ट तो इन्वॉल्व है ही है। अब ये चीज़ें हम लोग दिन ब दिन देखते रहते हैं कि कैसे होना है। तो दिस इज़ द स्कोप ऑफ वर्क, कैसे होना है, कहाँ पे होना है, किस टाइम देना है, किस टाइम नहीं देना है, कितना देना है। दे हैव मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स इंक्लूड्स होते हैं स्कोप ऑफ वर्क में। फर्स्ट इज ग्लोसरी, इट्स ऑल्सो यूज्ड एज स्कोप ऑफ वर्क, includes definition of odd English terms, things that the documents could be perceived as someone who does not work in a particular industry. So, it is just a kind of summary in which detail of the items or documents described, so every person can understand that. अगर मैं उस इंडस्ट्री का नहीं हूँ या मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो मैं उस ग्रोसरी को देखते हुए मुझे उसे समझ में आ जाएगा। मैं उसे पढ़ूँगा, स्टेटमेंट दिया होगा, इसका मतलब ये होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पेज पे आपको मिलेगा। हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये क्यों किया गया। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हर चीज़ जानता हो। सो इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है मैं उस इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मैंने पैसा लगाया, मूवी में मैंने पैसा लगा दिया, पर मैं मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आई जस्ट एज अ इन्वेस्टर। सो द प्रोड्यूसर, द अदर डायरेक्टर एंड द अदर स्टाफ गिव द ग्रोसरी टू मी कि सर ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये होता है, ये यहाँ खर्च होगा, इसे जाऊँगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम अगर है बिग प्रोजेक्ट्स में तो उस प्रोजेक्ट को बनाए इसलिए किया कि उस प्रोजेक्ट को सॉल्व किया जाए। अगर मैं प्रपोजल रखता हूँ स्वच्छ भारत अभियान का स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, और मैं कहता हूँ कि मैं सारे जितने भी आपके शौचालय हैं उन शौचालयों में सैनिटाइजेशन का काम मैं करूँगा, मेरी कंपनी करेगी, देन आई हैव टू गिव द स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ है? क्योंकि दो आपने शौचालय तो बना दिया, पर वहाँ पे जो पर्सन जा रहा है हो सकता है वो कोविड पेशेंट हो, वहाँ पे बार बार चेकिंग तो होती नहीं है, थर्मोस्कोप भी नहीं होता, और वहाँ पे बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन का काम आप मुझे दीजिए, आई विल लुक आफ्टर दैट। तो प्रॉब्लम इज़ प्रॉपर सैनिटाइजेशन को करना। प्रॉब्लम इज़ कोविड इज़ ए वेरी बिग problem nowadays in all over the world, and people are taking the opportunity by producing the manufacturing the service, manufacturing the product and provide the services which are related to the COVID. So, problem statement is a statement in which you have to give the statement of goal and agreement. So, what is the goal? Goal is a shorter vision. The goal of the state project is to provide clean and sanitized toilets in every part of the city, every part of the Lucknow. This is the goal of the project. So, people can use them. People don't afraid to use that because वो hygienic है कि नहीं है. So, this is the goal. Objective of the agreement.
or deliverables, complete this section object which are taking that will be measurable and knowable to at the end of the agreement. मेन आपका एग्रीमेंट जो आपके बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, आप कैसे आप मेज़र करोगे, व्हाट आर द मेजरिंग टूल्स ऑफ दैट, हाउ यू मेजर द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ यू मेजर द टूल्स कि किस तरह काम हुआ या नहीं हुआ, डिलीवर किया गया या नहीं किया, ये सब आप स्टेटमेंट्स में लिखेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर मीटिंग कॉल, कॉन्फ्रेंस और अदर सॉफ्ट डिलीवर. सो देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स ऑल्सो बी देयर which is looking forward while we do the projects. It's help to conduct the project or complete the project on time by the performing party, because if someone is administrating them, they will guide it, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, इस तरह करना है. And finally we get the better result, good result. So administration part is also very important for any kind of project deliveries or deliverables. Any requirement that is not at end product of specific task but is required to perform party. उस किसी भी प्रोजेक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जरूर, चाहे वो छोटा से क्यों हो. When we talk about, I am giving you the example of marriage party, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बंदा होता है जो सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि टाइम पे शिकायतें किसके पास होती जाएंगी, उसी के पास जाएंगी. अरे भैया देखो खाना टाइम पे गर्म नहीं मिल रहा है, अरे भाई देखो वहाँ पे पानी गिलासेस नहीं है, पानी गिर रहा है, अरे देखो झाड़ू. सो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज ए इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. द पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि भाई जो गेस्ट हैं उनको गर्म खाना मिले, गिलास प्रॉपर मिले, एक्सेस ग्लास रखे रहें जिससे कि ग्लास की कमी ना हो, पानी वेस्ट ना हो, कीचड़ ना हो, सफाई प्रॉपर रहे, क्योंकि वी आर इन्वाइटिंग द गेस्ट. दिस इज रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, एंड व्हेन क्लाइंट रेपुटेशन एंड गुडविल हैम्पर्ड, इट इज़ ऑल्सो हैम्पर्ड योर गुडविल. अगर क्लाइंट खुश है देन ही विल गिव द रेफरेंसेस कि हाँ भाई उससे बात कर लो, अगर आपके शादी है उससे बात कर लो, वो बहुत अच्छा करवा देते हैं, पूरा इंतज़ाम कर देते हैं. हम ऐसे तो बोलते हैं नॉर्मल डेज टाइम पे. इसी तरह सेम टाइम इट ऐड द प्रोफाइल, इंक्रीज द प्रोफाइल ऑफ द परफॉर्मिंग कंपनी. इफ L&T did well and complete the Lucknow metro on time, this is the profile, is added to its profile. So friends, today we will discuss about the deliveries and scope of work, which is important to understand. It is must be in written form, it must be a proper arrangement of all these things. So you can hand over the project to the client, and client will give the references which will boost your overall profile. Thank you for watching this video.